हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जावा। सो आज का टॉपिक है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यूजिंग स्प्रिंग बूट। ओके, सो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता क्या है? फॉर एग्जांपल, यू हैव अ यूजर टेबल। ओके, यूजर हैव अ मल्टीपल रोल। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज अ वन यूजर। ओके, तो प्रिंसिपल को मल्टीपल रोल हम असाइन करते हैं, लाइक एडमिन, सुपर एडमिन। ओके, तो दैट टाइम यूज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। सो ओके, सो रोल रोल आपके पास है लाइक एडमिन। ओके, सो एडमिन हमारा प्रिंसिपल भी हो सकता है, लाइक चेयरमैन भी हो सकता है। ओके, सो दैट टाइम यूज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, सो उसको डेवलप कैसे करते हैं? यूजिंग Spring Boot. So let's start here. First, go to Eclipse. Then create project. Select file, new. Then other. Type here like Spring Starter. Then select this. Then next. So write here our project name like mapping relationship like many to many like this. Then select JDK version as a 17. Then select type as a Maven. Okay. Then next. Then select dependency like JPA for Hibernate. Then MySQL for database connectivity. Then Spring DevTools. Okay. Then Spring Web because हम web RESTful API कर रहे हैं. Okay. Then next. Then finish. So you can see यहाँ पे हमारा project create successfully. Okay. Then next step is create package. Then click on this new, select package. So like controller. Okay, and then finish. Then next one new package dot service. Okay, then finish. Then next new select package dot repository. Okay, finish. The next one is new package dot result response like this. Then finish. Then last one is new package dot model. Okay, and then finish. Okay, first हम क्या create कर लेंगे? Like model. One is user and another one is role. Okay, then select new class like user and finish. Then use here like annotation like @ table like this. Then write here name in double quote like user. This is our user table. Okay, and next annotation is entity because this is our entity class. Okay, then use here @ id because this is our primary key. Private integer id. Okay, and then next is private string like username. This is another column. Next is private string like age like this. Use here as a integer. Okay, so next हम क्या करेंगे? Like next हमारा मॉडल है like role new class. Right here like role, then finish. So use here like @ table annotation. Okay, and then use here like name in double quote like role. This is our table, that's why I write here role. Then next is @ entity annotation. Okay, and then next is use here @ id because this is our primary key. Then use here private integer like id. Okay, then next is private string as a role name. Okay, so create here like getter setter, then select source, generate getter setter, then select all, then generate. Okay, so next step is हम क्या करेंगे? id को एज ऑटो जनरेट करेंगे. ओके, सो यूज हियर @ generate value. Okay, and then import this one and import the generate type. Okay, and then save this code. Okay, so copy this line and go to user and paste here like this. Okay, so next step is यहाँ पे हम क्या करेंगे? रोल एज फॉरेन की यूज करेंगे यूजर टेबल में. सो यूज हियर लाइक मेनी टू मेनी एनोटेशन. ओके, लाइक दिस.
then use here like cascaded. Okay, then cascaded type all. Okay, like this. Okay, and then next step is like private, call here like set and pass here our role model like this, and create object role like this, and then use this new keyword, and then use here hashtag like this, and then use semicolon. Okay, so next step is create @join table annotation, @join table. Okay, so write here table name, because हम new table create करेंगे like user underscore role. Okay, then use comma. Okay, so next is join columns, then use their @join annotation. Okay, and then pass here like name, user id underscore user id. This is our another column, and then next is inverse join, then use here like another annotation @join columns like this, and then pass here like name, like role id, role underscore id like this. Okay, and then save this code. ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे हमने अनदर टेबल किया लाइक यूजर अंडरस्कोर रोल, तो उसमें हमने कॉलम ऐड किया लाइक यूजर आईडी, वन इज यूजर आईडी एंड अनदर वन इज रोल आईडी. ओके, सो यहाँ पे हम गेटर सेटर क्रिएट कर लेंगे. देन सिलेक्ट न्यू, सॉरी सोर्स, जनरेट गेटर सेटर, देन सिलेक्ट ऑल, जनरेट. ओके, सो यू कैन सी generate successfully. Okay, so next step is create controller, new class like user controller like this, and then save this code, and then another controller is role controller, new class like role controller like this, and then finish. Then another is repository, new class user repository. Okay, and then finish. Then next one is new class. Okay, then use here role repository. Okay, then finish. Okay, then go to user repository, use your interface, this is our interface, and then next step is use your annotation like @repository. Okay, and then use here like extend keyword, and then use here like jp repository, pass here our user model because this is our user repository, and then use here like integer like this, and then save this code. Go to enroll repository, same as it is, use your like @repository annotation like this, then use your like interface, then use your like extend jpa repository like this, and then pass here our role model because this is our role repository, that's why use here role, and then pass here like integer because our id as a integer, that's why use here integer, and import this one like this, and save this code. Okay, so another is service, new class, so create here like user service like this, and then finish. Then next one is new class like role service like this, and then finish. Okay, and then is next result response, so हम यहाँ पे result response return करने वाले like हमारा मेटा डेटा और like number of records. Okay, so create here like metadata response like this, then finish. And then next one is new class result response like this, and then finish. Okay, so go to metadata, so create here like private integer like number of records like this, and then next is private string
like message, fail or success, okay, anything, private, string, like code, success to 200, failure to like 400 or 401 or not, okay, success to 200 or failure to like 401, okay, source, generate getter setter, then select all, generate successfully, okay, save this code, go to in result response. So create here like private, call here method to object, okay, and create here object like this, and then next in one is private, create here object, create result as a object, okay. So you go to in role controller, okay, so use here like request mapping, okay, so यहाँ पे हम API के starting point write करने वाले, so that's why use here request mapping and pass here like role, okay, and then another is REST controller annotation, because this is our RESTful API. So first यहाँ पे मैं like use or auto wire, okay, and call here our role service, okay, using auto wire, okay, so I can access all methods in role service using auto wire, okay, that's why I use here auto wire. So next step is create here public, so next step is यहाँ पे हम API write करेंगे like get API save API for role, so use here like get mapping annotation like this, then next is public, call here our result response like this, and create here method like list, okay, and then use here curly braces, so copy this role service and use here return role service dot get list, this is our method, okay, and then use semicolon, okay. So you can see यहाँ पे मैं session will create this method in role service, so click on this, okay. So next step is use your annotation here like added service, because this is our service class, so यहाँ पे हम business requirement write कर दें role service, okay. So next step use here added auto wire annotation, so service को हम क्या करते, repository को connect करते, so call here our private role repository like this, create object for role repository, okay. So next step is, so यहाँ पे हम क्या करेंगे like try catch block को कॉल करेंगे like try, sorry, okay. So next step is create here like metadata response object, okay, then use new keyword, okay, copy this metadata response and paste here, then use semicolon, then next is result response, create here result response object, then use new keyword, copy this result response and paste here, and then save this code, okay. So यहाँ पे हम क्या करेंगे like metadata response, so यहाँ पे हमें रिटर्न करना है डेटा, ओके. सो metadata response dot set code like 200, okay, because this is our success. Next is metadata response dot set message, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, फाइंड करने वाले, सो राइट हियर लाइक गेट records from database like this, okay. And next is metadata response dot set number of records, like call here our repository dot find out dot size, okay. So डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में रिटर्न कर देंगे. सो नेक्स्ट स्टेप इज मेटाडेटा रिस्पांस डॉट सेट, सॉरी, रिस्पांस डॉट सेट
response dot set like metadata so call here metadata response, okay, like this. And then next is response dot set like result, okay. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, like रिपोजिटरी को कॉल करेंगे and call here like find all. This is our JPA query, okay. डेटाबेस में रोल के जितने भी रिकॉर्ड है उसको हम रिटर्न कर लेंगे यूजिंग फाइंड ऑल मेथड, मीन्स JPA query, okay. So return here response, okay, like this. And then next is semicolon, okay. Copy this code and paste here, okay. So write here like 401. So write here fail to fetch records from database, like this, okay. So number of records is 0 because this is our catch block, and result is null, like this. And save this code, okay. So next API is save API, okay, like post API. So use here like @post mapping annotation. So copy this code and paste here and pass here like save, okay. And here pass as a like list, okay. So create here method like save. So here create like save role, like this, okay. And then next is use here like request body annotation, okay, क्योंकि हमें postman में pass करना है object, so that's why I use here request body annotation. So call here our role object, role model, and create here object role, okay. So copy this role object and pass here like save method. So you can see here यहाँ पे हमें selection मिल रहा है create this method and role service. So click on this, okay. So copy this code and paste here like this, okay. So यहाँ पे हमें postman से data आ गया in role, okay. So इसको हमें database में save करना है. So कैसे save करेंगे? So call here repository, use save and pass here our role and paste here, and then use semicolon, okay. So here I have created another object like role, save like this, okay. So copy this one and pass here like result response, okay. So number of records हम कितना save कर रहे हैं, like 1. So use here like 1. Change here message as a record save success in database, okay. Fail to save records in database, okay. Save this code, okay. So same as it is, go to in user controller and use here like request mapping annotation and pass here like slash user like this. And then next annotation is @rest controller, okay. And then next is call here like @autowire private like user service, and create here like user service object like this, okay. So go to in role controller, copy this code and paste here in user controller and change here like our user model and create here like user object, okay. And import this one, okay, and pass here like role and copy this user service and paste here like role service, okay. So create here like user, okay. So go to in role service, okay, and copy this code, paste here in user service, okay. So use your annotation like @service because this is our service class,
and then next step is use here like @AutoWire and call here like private like user repository, create here user repository object, okay, and save this code. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लाइक यूजर रिपोजिटरी को कॉल कर लेंगे एंड पेस्ट हियर, ओके, एंड सेव दिस कोड। सेम एज जैसे हमने रोल में किया फाइंड, वैसे ही हमें यूजर में फाइंड करना है, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप इज call here like user model, create here like user object like this and copy this one and paste here, okay, and create here like user, so create here user object user save and copy this one and paste here like this, okay। so यहाँ पे हमें क्या करना है like user repository को कॉल करना है, copy this one and paste here, okay, and save this code, go to user controller and save this code। सो नेक्स्ट स्टेप इज अगर हमें हमारे एप्लीकेशन को डेटाबेस को कनेक्ट करना है, सो कैसे कनेक्ट करेंगे। सो गो टू नेट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने राइट किया लाइक यूजर नेम फॉर माइस्क्यूएल एंड पासवर्ड एज अ रूट, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया लाइक हाइबरनेट डीडीएल अपडेट कर लिया, मीन्स हमने जो भी मॉडल क्रिएट किए वो जाके डेटाबेस में ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे, ओके। दैट्स व्हाई यूज हियर हाइबरनेट डीडीएल अपडेट, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे डेटाबेस का नाम है रिलेशन मैपिंग, सो कॉपी दिस वन एंड क्रिएट दिस डेटाबेस इन MySQL, सो ओपन MySQL, click on this and type here password root, okay। so create database, type here relation mapping and execute this one and refresh this here, so you can see यहाँ पे हमारा database create successfully, okay। so go to in Eclipse, go to in main class, so execute this code, so run as Spring Boot, so you can see यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे टेबल क्रिएट हो गए लाइक 3 टेबल, वन इज यूजर, अनदर वन इज रोल एंड थर्ड वन इज यूजर रोल, ओके। सो go to in MySQL and refresh this one, so you can see here this is our 3 table, one is role, another is user and third one is user underscore role, okay। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, रोल को डेटाबेस पे सेव करेंगे, बिकॉज दिस इज अ रोल इज हमारा मास्टर टेबल है, ओके। बिकॉज हमारे रोल हम पहले से असाइन करेंगे लाइक एडमिन, सुपर एडमिन और एनीथिंग, ओके। सो कॉपी दिस रोल एंड पेस्ट हियर, देन स्लैश सेव, ओके। सो गो टू इन रोल मॉडल, कॉपी दिस रोल नेम, आईडी हमारा ऑटो जनरेट है, सो यहाँ पे हमें ओनली रोल नेम ऐड करना है लाइक दिस, सो पास हियर लाइक admin, okay, and hit this API, so you can see here record saved successfully in database. If you want to check in database, you can check also, go to in role and execute this one, so you can see here role admin save successfully, so हम next add करेंगे like super admin, okay, and execute this one, so you can see here record saved successfully, okay। so इसको हम गेट करके देखते हैं, लिस्ट use here like get and execute this API, so you can see here I got data from database like 2, okay। so next is, so हमें क्या करना है like वन यूजर को 2 रोल असाइन करने, सो कैसे असाइन करेंगे, ओके। फर्स्ट हम सेव करेंगे, गो टू इन यूजर कंट्रोलर, सो कॉपी दिस यूजर and paste here and write here like save API and select here post, okay। so go to user model, so copy this username like username comma like age, okay। so age like 23, so username like पूजा like this, okay। so हम यहाँ पे क्या करेंगे like पूजा को हम 2 रोल असाइन करेंगे, okay।
लाइक एडमिन और सुपर एडमिन। सो उसको कैसे असाइन करते हो, मीन्स उसको कैसे पास करते हैं यूजिंग पोस्टमैन। सो लेट्स सी हियर, use here comma, go to in user model, copy these roles and paste here in double quote. Okay, use here like array. Okay, then curly braces. Okay, and pass here like id as a 1. Okay, next is the use comma, then curly braces, use your id in double quote, id, and then another role is super admin का id हमारा है like 2, so pass here like 2. Okay, so execute this API, click on send. So you can see here data saved successfully in database. So go to in MySQL, so execute this user table. So you can see here Pooja record, username Pooja is saved successfully. Go to in user role, so you can see here 7 को आईडी को रोल 1 हमने असाइन किया। ओके, 7 को हमने 2 भी असाइन किया। ओके, यू कैन सी हियर यहाँ पे हमने 1 और 2 असाइन किया। लाइक पूजा को पूजा को हमने एडमिन और सुपर एडमिन असाइन किया। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट अनदर यूजर लाइक एबीसी। ओके, सो उसको हम रोल 1 असाइन करते हैं ओनली। ओके, so hit this API. Okay, so you can see a record saved successfully in database. So go to in user table, so execute this one. So you can see here ABC ID is 8. So 8 को हमने क्या असाइन किया, like 1 ID. So go to in user role. So you can see here 8 को only हमने 1 ID असाइन पास किया, like उसको हमने admin as a role असाइन किया। Okay, so इसको हम get करके देखेंगे। Okay, so go to in postman. So right here like list. Okay, click here like get. So hit this API. So you can see here I have got a record from database. So पूजा को हमने असाइन किया like admin, super admin, और ABC को हमने असाइन किया like role admin. Okay, so इस तरह से हम role असाइन करते हैं like many to many relationship. Okay, so go to in user model. This is most important step. One is a like, so you use here like list instead of set, and next, so use here like fetch instead of cascaded, and next is most important, use here list. Okay, using this syntax, means using this keyword, we can save many to many relationship mapping in database. Okay, इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।